Assalamu alaikum dear students of level 3. Today we are going to start our question number 16. Question number 16 is do unit 9 verbs the base form on the geometry book. Open unit 9 of your geometry book. Yes, on page 33 we have unit 9 verb. What are verbs? Verbs are doing or action words. The base form of verb. Base form of verb. What is base form? We have seen that point 1 we have seen that the same verb can have different form कि एक verb की different forms हो सकती हैं. We get these different forms of a verb by adding different endings to it. हम different forms कैसे हासिल कर सकते हैं? हम base form के end में s, ing, ed ऐड करके different forms gain करते हैं, हासिल करते हैं. Point 3 is some verbs may change their form without the help of an ending but by an internal change. Internal change कैसे होता है? ये देखें stand, stood. Here the first and the last letters are same but the internal an double o. an is replaced by double o. Internal change होता है इसमें. जैसे fight, fought, throw, threw. Okay, now learn. This is the definition. You have to learn it. Okay, note down, learn it. Underline this definition and learn it carefully. Okay, so each verb has a basic form to which we add an ending or which we change to get another form. जब हम base form के end में कुछ भी s, ing और ed ऐड करते हैं उसको new form में change करने के लिए वो हमारे पास base form होती है. Okay, फॉर एग्जाम्पल इन टू अबव प्ले इज़ द बेस फॉर्म. अब ये देखें यहाँ पर जो प्ले है दिस इज़ द बेस फॉर्म. दिस इज़ द बेस फॉर्म. अब देखें प्ले के साथ जब हमने एस ऐड कर दिया तो प्लेज हो गया. प्ले के साथ जब हमने ing ऐड किया तो प्लेइंग हो गया, कंटिन्यूस में आ गया. प्ले के साथ जब हमने ed ऐड किया तो ये पास्ट टेंस में चला गया, प्लेड. ओके, In 3, stand, fight and throw are the base form which we have changed to get the past tense forms of verbs. अब देखिए stand, stood is the second form, past form बन गई, इसका internal change हुआ. fight, fought हो गया, throw, threw होगा. internal change के साथ हमने उसकी past form हासिल कर ली. The base form may be used as, base form को हम use कर सकते हैं. कैसे use कर सकते हैं? The present tense form of verb when the verbs are used with I, we, you, they and plural nouns. प्रेजेंट टेंस को हमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस भी लगा सकते हैं और विदाउट एस या ई एस. इट्स बेस्ड ऑन सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू टेंस. आई रीड, यू रीड, दे रीड, जॉन एंड जेफ रीड. ओके, सिंपल इन्फिनेटिव मीन्स वी एड टू विद द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव्स होता है. लाइक yes, now look at this example. To go, this look, go is the base form of verb and that we add to before it. This is infinitive. To watch, to write, you can add more example by yourself also. Okay, next the exercise is pick out the verbs from the following sentences and state whether the base form of each is one has been done for you. वो कह रहे हैं कि आप सबसे पहले verbs को निकालें उसके बाद उसकी base form बताएं. For example, the snake hissed. This is the sound of a snake. Verb क्या है? hissed है. बेस फॉर्म क्या होगी हिस्ड की? हिज. ईडी जिसमें आता है वो पास्ट टेंस होता है. ओके, अ ट्रेन कैरीज डिफरेंट पीपल टू डिफरेंट प्लेस. नाउ हेयर वर्ब इज कैरीज. द बेस फॉर्म ऑफ कैरीज इज कैरी. यू हैव टू नोट डाउन ऑन योर बुक. ओके, टर्न द पेज. व्हेन विल आवर वेकेशन बिगिन? बिगिन इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑल्सो बिगिन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ही नील्ड डाउन एंड लुक्ड अंडर द बेड. वर्ब क्या है इसमें? नील्ड और looked और इसकी बेस फॉर्म क्या होगी? kneel and look. The birds flew away when he blew the whistle. Here verb is flew and blew and the base form of is fly and blow. Flew की बेस फॉर्म क्या है? fly और blew की क्या है? blow. Okay. 6. The dog chased the burglar away. Verb क्या है इसमें? chased and the base form is chase. The sun was shining fiercely and we were sweating. Shining and sweating and the base form is shine and sweat. There are dark clouds in the sky and it will rain soon. Here are is the past form and the base form is be. Rain. Have you read Alice's Adventures in Wonderland? Here read is base form of verb. When will the train leave? Leave is the base form of verb. Wash your hands and sit down at the table, said mother. Here underlined words are verbs, base form of verb. Wash, sit and said is the past form. The base form of said will be say.
I shall be returning this book to the library today. Shall be returning. Returning, we add base form of verb. We add ing with the base form of verb. So the base form is return. How old are you? R is the base form, past form, and the B is the base form. The old lady asked the boy. Asked, base form of asked will be asked. The earth goes round the sun. Here, go is the base form of goes. I shall lend you my bicycle if you lend me your camera. Here, underlined words are base form of verbs. Okay, note down on your remedy pack and memorize it also carefully. Thank you so very much.